Hello everyone, welcome back to my Sunday video where we make video on healthy food recipes and small recipe which is very good for children and healthy for children. I just make that either recipe or we will talk about healthy food habits. So today I'm going to talk about healthy food recipe which is very important and this is important because most of the time you guys are using that in house on the daily basis, I can say. So today I want to talk about something that almost every house uses, something we keep on the dining table, something our children absolutely love with everything, where be it pranta, be it any kind of other roti bread or something. But most of us don't know why we should limit it. I'm not saying don't give it, but we should limit it. What if I'm telling you instead of limiting, you can make it at home? I will tell you how. So, till now, you understood that what I'm talking about. Yes, I'm talking about the market sauce. So think about it. We use sauce with parantha, noodle, pasta, sandwich, momos, burger, pizza, and children love it so much that sometimes food without sauce feel incomplete for them. Most of the time, I think breakfast is with sauce. I have seen many mothers gives. So, but today, let me tell you why we should be careful, especially when it comes to the child developing brain. When the children are growing, they are toddler, they may be into the puberty or maybe during their 1920, then definitely you should avoid this. And instead of avoiding, you can limit it. So the ingredient, some of the ingredient which is in the sauce. Let us discuss first why we should rethink giving market sauce to children. So let's start understanding what is actually inside these sauces that we buy from the market. I studied about it. I read about it that most ready-made sauces contain ingredient like added sugar or high corn syrup to thicken it. So adding sugar is not a problem, but what quantity you are adding, how much you are adding is important. So the corn syrup which we use for thickening it, that is also not good for health. If we talk about what is the effect of corn syrup, which is fructose corn syrup in sauces, it can increase the sugar craving in children, and children will become hyperactive. मूड स्विंग हो सकता है, हिडन वेट गेन हो सकता है, ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है. So indirectly, when we or our children are consuming it for longer time, it has negative effect. Second ingredient, they put artificial color like red 40, yellow 5, yellow 6. There are certain kind of color which will make sauce color different. These are linked to hyperactivity in the children. Children will become hyperactive. So they may add artificial flavor like that can trigger headache, allergies. They don't have any nutrition. And now I'm talking about which is very important, MSG, monosodium. Somewhere it is that can cause restlessness, headache, overeating. So the most important ingredient which I read about, that is sodium benzoate. Because of that, I started making preparing sauce at home for my children. So this is also uh, available in the sauce, the ingredient sodium benzoate, which will use to keep it for longer hour, like preservation, for preservation.
And when we are taking sauces from outside, it has high sugar and high salt also, which can damage our kidney, may increase blood pressure or certain things. And most important, they use trans fat oils, which is not good for brain development of our children. So, as I told you, for thickening the sauce, they put cornstarch, and which is not good for children health. It can spike their blood sugar level very quickly. So, let us understand why we add those kind of ingredient in that, and what are the sauces in which it is available. So let me tell you, if you are talking about tomato sauce, chili sauce, soya sauce, Szechuan sauce, hot and sweet chili sauce, barbecue sauce, any kind of sauce, whether it is pizza sauce, pasta sauce, all ready to eat has that thing. So because companies are using this to prevent fungus and bacteria and to increase their shelf life. So they have to do business, but our children are ours. So we need to understand what we need to give to our children. Because if we are giving this thing to our children with these ingredients, then it will increase their hyperactive. Children will become hyperactive, mood swing, reduce their attention span. uh, they are not able to focus on study. Sometimes we think why it is happening. It may be happening because of the food we are giving, because of the environment around us, but we are not understanding that what we are consuming or what we are giving to our children, and we are just blaming that my child is not good, maybe his brain is not working, maybe he is not capable enough, or maybe certain things we keep on saying. So why I started making sauce at home, because I read about sodium benzoate. I did not bother about other ingredient, whether it is cornstarch also, but sodium benzoate is the ingredient which I did not like, because many parents ask that why we should not give. Does it harm the child brain? No, no, it is not harming. There is no solid evidence that sodium benzoate directly damaging the brain or development or doing something bad. But it is not good for children who are in the developing stage. The concerns start when it consumed frequently, because this, as a sauce, we are consuming frequently. If this is in some other product, it's okay. But if you are consuming it on the basis of out of 7 days, 6 days you are consuming, that is the problem. But everybody know that sauces, jam, packets, juices, all children are taking every day almost. So, what are the possible side effect if your child is consuming those sauces every day? If you are talking about tomato sauce, mostly they take. There can be certain changes or certain symptom in your child. If it is coming, just avoid market sauce. First is he's not having proper attention towards anything, and he's hyperactive, means hyperactivity issue your child has. Some children may become more restlessness or less focused on study, on any work. I'm not talking about study, but any work. And second can be most of the children stop eating healthy food. They start eating everything with sauce because it gives them taste. So they develop the when they are not eating healthy food, they develop poor focus, low memory, and slower emotional regulation. They are becoming angry very soon. Third important thing is, which is very important, gut health. Gut and brain connection will not form properly if you are frequently taking the sauces. It disturbs the gut bacteria and increase acidity. uh,
when the gut is imbalanced, then mood swing will happen, anxiety, poor concentration. Do you know, when our stomach is upset and we are not feeling good, our gut health is not good, we feel so much like I am not feeling of eating, I don't want, and I get stressed. We start sometimes we have anxiety also. So it happens. Gut health is the most important, which we need to take care of. So fourth important thing is, when sodium benzoate combined with vitamin C in drink stored in heat, that too in sauces as well, then small amount of benzoate can form, which is not good for long term health. And when I studied about it, it clicked in my brain, oh, I should not give it to my children. And from last 2 year, I am not giving market sauce to my children. So as a parents, we can only do that, we can provide them healthy thing from the kitchen, because a child's brain grow best with nutrition plus connection plus routine. If we are maintaining all these three things, you are raising a child who is kind, compassionate, and calm child. So sodium benzoate doesn't directly damage the brain, but frequently when we use it, frequently when we use processed food, it can affect their attention, behavior, and emotions, which is very, very important. So, what are the better choices? Means you can make it at home. That's all. And I'll tell you very simple recipe. And there is one myth that we should not eat sugar. We should not give sugar to children. I think many people think that if children will eat sugar, they will become hyperactive. They will have a toothache or something. But I don't think so. Limited quantity, whatever limit is there, means small quantity if you are giving, then it is not the problem. Sugar is important for children. They are playing. They need high energy. They need to have a full energy. So if you're giving sugar to your children, it's hardly matter. And you should not give over, but yes, in limited quantity you can give. And many people have thing in mind that good means jaggery, which we call, and sugar, which is white sugar. White sugar is not good, jaggery is good. I don't think so it is, because both have same things. And nothing, sweet is sweet. But if it is taken in the limit, it is good. So let me show you how simple it is to make healthy sauce at home. And you have to use very less ingredient, and within very less time you can make it, and you can put anything whatever you want in your sauce. So let's start, and I will tell you how to make. Before showing you the recipe how I made the sauce, I'm just telling you what all ingredient I used. I used garlic, I used ginger, tomatoes, sugar, salt, chili, whether it is powder or raw chili, and beetroot. And for preservation, I used white vinegar, which is food grade, safe for cooking and salad. I will show the picture which you can use, and it is very important. If you are keeping it for longer, you have to use this, and if you are not keeping it for longer, there is no need to put the vinegar also. So let's start the recipe and do it. सारे टोमेटोज को आपको छोटा छोटा कट कर लेना है. Similarly for ginger, garlic, and anything you are taking, you have to cut it small pieces, and then put in some water in the pan, little bit drop, and then put all things in the pan together. So this is how, like, you can put salt, chili, and tomato, garlic, and ginger. Cut them properly and put it in the pan.
उसको मिनिमम 10 टू 15 मिनट आपको बहुत अच्छे से पकाना है एंड देन कीप इट फॉर कूलिंग एज शोन इन द पिक्चर। अभी तक का अगर मैं प्रोसेस बताऊं तो मैंने कटे हुए टोमेटोज को मैंने उसे बहुत अच्छे से पकाया है। जैसे कि सबसे पहले मैंने पैन लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा वाटर डाला ताकि आपको पता चले कि पैन हॉट हो गया है। उसके बाद आप कटे हुए टमाटर, जिंजर, गार्लिक, चिली, सॉल्ट एंड बीटरूट उसमें सब कुछ डाल देंगे एंड देन उसे कुछ देर पकाएंगे एटलीस्ट 10 to 15 मिनट, और उसे मैंने कूलिंग के लिए रख दिया है जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया है। उसके बाद मैं उसे ग्राइंड करूंगी जब वो ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद उसका पेस्ट बनाऊंगी, और पेस्ट को कैसे छानना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक मिक्सी जार लिया है, उसमें मैंने वो जो पेस्ट जो टोमेटोज को मैंने पकाया है उसे मिक्सी जार में पूरी तरह से पीस लिया है। वो बहुत ही बारीक होना चाहिए, उसमें टोमेटोज के सीड नहीं रहने चाहिए, चिली के सीड नहीं रहने चाहिए। सो हम उसको ग्राइंड करके हम उसे छन्नी से छानेंगे। वो कैसे छानेंगे, आई जस्ट टेल यू द प्रोसेस। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मैंने एक छन्नी लिया है और उसमें जो भी पेस्ट बना है उसको मैं ग्राइंड करके उस छन्नी से उसको बहुत अच्छी तरह से छान रही हूँ ताकि उसके जो भी हार्ड पार्ट हो वो मैं उसे थ्रो कर सकूँ, और जो नीचे अच्छी तरह से जो पेस्ट बना हुआ है उसको ले करके मैं सॉस बनाऊंगी। अब आप देखना किस तरह से वो नीचे आता है और हम उसे किस तरह से बनाते हैं। ये प्रोसेस आपको बहुत ही पेशेंस से करना है क्योंकि कई बार हम उसको जो उसका रॉ पार्ट होता है उसे भी हम उस सॉस में डाल देते हैं, जो कि बहुत खाते हुए बहुत बुरा लगता है। अगर आप मार्केट की तरह सॉस बनाना चाहते हैं तो पेशेंस रख के उसको बहुत अच्छी तरह से छानिए। अगर आपको वेस्ट नहीं करना है तो जो छाना हुआ मटेरियल निकला है उसको आप दोबारा मिक्सी में डालकर फिर से ग्राइंड कर सकते हैं। कुछ मिक्सीज ऐसी होती हैं जिसमें पूरा का पूरा वो ग्राइंड हो जाता है और प्रॉपरली कुछ रेजिड्यू नहीं बचता, लेकिन कुछ मिक्सीज जैसे मेरी मिक्सी है उसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो इसलिए मैं वो चीज़ें बहुत ही प्रिसाइज़ली करती हूँ क्योंकि जब आप सॉस बना रहे होते हैं और अगर आपको मार्केट की तरह सॉस लगना है, तो आपको वो बहुत ही अच्छी तरह से महीन पीसना होगा। जो जिस तरह से मैंने दिखाया है कि ये बहुत अच्छी तरह से महीन पीस गया है, मैंने पूरी तरह से इसे सेग्रीगेट कर लिया है, बाकी की चीज़ें मैं फेंक दूँगी, और ये जो सॉस बचा है इसे मैं कैसे पकाती हूँ, आई विल टेल यू द प्रोसेस फर्दर। अभी मैं थोड़ा-सा हाथ धोकर आती हूँ और देखते हैं कि कैसे इसको हम अच्छी तरह से अब पकाते हैं। हमें अब शुगर, सॉल्ट और चिली क्वांटिटी मतलब जो भी आपको सही लगता है, अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग शुगर डालते हैं, बहुत सारे लोग शुगर नहीं डालते। मैं शुगर डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा स्वीट सॉस पसंद आता है। और अगर आपको स्पाइसी हॉट एंड सोर सॉस पसंद है तो आप उस तरह से चिली एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब प्रिजर्वेशन के लिए हम विनेगर डालते हैं, विनेगर भी फूड ग्रेड होना चाहिए, आप सिंथेटिक विनेगर नहीं डाल सकते। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसे मैंने थोड़ा-सा गरम किया है और उसमें मैंने जो सॉस रखा था वो पूरा का पूरा डाल दिया है। मैं उसे कंटीन्यूअसली स्टिर करूँगी। आप कढ़ाई बड़ी ज़रूर लीजिए, और स्टील की कढ़ाई में अगर आप बनाते हो तो बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि आप अदर कढ़ाईज़ में अगर बनाते हो तो आधे उसका केमिकल्स आ जाते हैं, इसलिए हमें स्टील के ही बर्तन यूज़ करने चाहिए। सो मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ। सो अगर आपने डाल दिया है तो आप उसे कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहिए। अभी आपको इसमें कुछ-कुछ चीज़ें डालनी है जैसे शुगर, अगर आपके बच्चे थोड़ा मीठा सॉस पसंद करते हैं, और अगर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और सॉल्ट अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कम है, आप डाल सकते हो। चिली अगर आप हॉट एंड सॉर सॉस बना रहे हो तो चिली ज़्यादा डाल दो, अगर नहीं तो फिर ऑलरेडी हमने रेड चिली डाला ही हुआ है। और अभी सबसे मेन इंग्रीडिएंट जो हम डाल रहे हैं प्रिजर्वेशन के लिए वो है हमारा विनेगर। विनेगर डालना भी एक ऑप्शनल होता है, अगर आप कुछ ही टाइम में उस सॉस को ख़त्म करने वाले हैं तो आपको विनेगर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिससे कि बहुत ही हेल्दी सॉस होगा। लेकिन मैं थोड़ा लंबे समय के लिए यूज़ करती हूँ, लगभग 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं विनेगर डालती हूँ। विनेगर फूड ग्रेड होना चाहिए जैसे कि मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका नाम बता दूँगी। वो थोड़ा कॉस्टली आता है, आप सिंथेटिक विनेगर नहीं लेना चाहिए क्योंकि अ, उससे उस तरह का टेस्ट भी नहीं आता। तो आपको काफ़ी टाइम तक जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए, और अगर आपको कच्ची से उठाकर देखना है कि
वो सॉस की तरह गिर नहीं रहा, पतला सॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि हम कोई कॉर्न स्टार्च नहीं डाल रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये थिक भी नहीं होगा। तो आपको धीरे-धीरे स्टीर करते हुए इसको पकाना है। आप जितना अच्छे से पकाओगे, उतना अच्छे से आपका सॉस बनेगा। सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। अगर आपको ये सॉस लाल लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसमें कलर डाला है। ये बीटरूट से अपने आप कलर आ जाता है और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। हर बार सॉस माँगते हैं। तो आप बताइए कि आपने ये सॉस बनाया और आपके बच्चों ने कितनी बार ये सॉस माँगा? अगर आप देख रहे हैं कि कलर सॉस का इतना सुंदर आ गया है कि मतलब मैं तो उसके बाद खुद ही कुछ ना कुछ बना कर के खा लेती हूँ और हमारे यहाँ ये सॉस बहुत ज़्यादा लगता है, तो मुझे ज़रूर पता है कि आप लोग ज़रूर बनाओगे ये सॉस और बनाकर मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये सॉस बनाया और आपको ये रेसिपी कितनी ईज़ी लगी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ईज़ी होती है और इसे जब आप एक बार बनाने लग जाते हो, तो कभी आप मार्केट से सॉस खरीदोगे ही नहीं। क्योंकि मेरे मुझे 2 साल हो गए हैं, मैंने मार्केट से कभी सॉस नहीं खरीदा है। हम लोग घर का ही सॉस बनाकर खाते हैं और मार्केट की तरह बिल्कुल ये बनता है। आप कोई भी इंग्रीडिएंट इसमें डाल सकते हैं और अगर बच्चों के लिए भी आप बनाना है तो एक पोटली बनाकर भी कई बार हम गरम मसाला जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग ये सब डाल के कपड़े में बाँध करके उसमें डालते हैं ताकि बच्चों को इम्यूनिटी अच्छा बना रहे। तो वो वाला सॉस मैं कम ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे कम पसंद करते हैं क्योंकि उसमें मसाला का टेस्ट आ जाता है। लेकिन दैट सॉस इज़ आल्सो वेरी हेल्दी। इफ यू वांट दैट रेसिपी मैं डेफिनिटली आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखूँगी। आप वीडियो के एंड में जो कमेंट्स होते हैं आप ज़रूर उस कमेंट में लिखिए कि आपको ये सॉस की रेसिपी कैसी लगी, आपके बच्चों ने कितना खाया या फिर आपने बनाया या नहीं बनाया या आपको कहीं समझ नहीं आया। क्योंकि मैं बहुत अच्छे वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा जब मैं रिकॉर्डिंग अपने किचन में कर रही होती हूँ, तो मेरे पास बहुत अच्छा कैमरेज़ नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई नहीं है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक एक ऐसी रेसिपी पहुँचा पाऊँ जो कि आपके बच्चों के लिए भी हेल्दी हो, आपकी फैमिली के लिए भी हेल्दी हो। लेकिन अ, शायद मैं जितना एक्सप्लेन कर पाती हूँ उतना कोशिश करती हूँ। अगर आपको कुछ भी इसमें लगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर असिस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।